Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we have met after a long time, in fact, after 1 week. So, dear students, we are here to discuss the tenses. Dear students, we have already discussed what a tense is. We have already discussed simple present tense and its 4 subtypes. That is simple present tense, that is present continuous tense, that is present perfect tense, and present perfect continuous tense. So dear students, here in this lecture we'll be discussing future tense. We'll be discussing the 4 future tenses, but in this lecture I'll be trying to complete first 2 tenses of future, that is simple future tense and future continuous tenses. ठीक है, तो उसके बाद inshallah in the next lecture we'll be discussing the rest of the 2 future tenses, that is future perfect tense and future perfect continuous tense. So here we'll be discussing future tense. Now dear students, as you all know that we have already discussed it in our Zoom class. Now those students who have not attended the Zoom class, this lecture is for those students. This audio lecture, this YouTube lecture is for those students, those who have not attended, who have not joined the Zoom class, who have not listened to me, who have not heard me in the Zoom class. This is for those. Now without wasting any time, let us move on to this future tense. Now dear students, first of all, let us try to know what this future tense is. Tense, as I have already told you, tense means time. It indicates time. It tells us about the time of an action. Getting it actually tells us about the time of an action, when an action is done. Getting so dear students, what is this future tense? ये future tense होता क्या है? Now future means, let us try to understand what future means first of all. Future means, it's a time that is going to come, that has not come, or that is not continuing. Getting? It's actually a time that is going to come. ठीक है, वो वक्त जो आने वाला है, future, मुस्तकबिल जिसको हम कहते हैं. And dear students, I have told you that we don't know. No one among us knows what the future is all about, what our future is going to be. Getting? We don't know anything about future. Allah knows about future. मुस्तकबिल के बारे में हम नहीं जानते हैं, Allah जानता है. ठीक है? So this is future, यानी आने वाला वक्त, कल. Getting? It's tomorrow. Getting? Or the day after tomorrow. So ये वही वक्त है, इसी को future कहते हैं. So this is clear to you. Now let us try to understand what future tense is, dear students. बाद में इसकी formation पर हम आते हैं. Dear students, it's used to express an action in the future. This is what future tense is all about. It's used to express an action in the future. यानी कोई काम जो future में होने वाला है. This is simple future is all about. It's used to express an action in the future. Getting? Yeah, we can say it indicates that the action will be done in the future time. यानी कोई काम जो future में होने वाला है, जो मुस्तकबिल में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है ना हो रहा है, बल्कि होने वाला है मुस्तकबिल में. Getting? Very simple. अच्छा, dear students, let us talk about its formation. You can see the chart there. इसकी formation आप देख सकते हो. It's there. It's right there on the top. यहाँ पे simple future indefinite. ठीक है? Now, अगर हम इसकी formation की बात करेंगे, its formation is, dear students, it's subject plus shall, will plus first form of the verb. Getting? Plus object. ठीक है? Subject plus shall, will plus first form of the verb. Getting? So it's like this. I shall write. We shall write. You will write. You will write. He, she, it will write. They will write. Getting? Yani, when I say I will write, that means, I shall write, that means मैं लिखूंगा. अभी मैंने नहीं लिखा है तो लिखने वाला हूं फ्यूचर में. We shall write.
हम लिखेंगे, अभी हमने नहीं लिखा है, लिखने वाले हैं। गेटिंग? सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको बता दूं, ये जो शैल और विल है, इंशाल्लाह ये मॉडल्स में हम इसकी ऊपर बात करेंगे। डोंट यूज, लिसन, डोंट यूज शैल विथ यू, दे, ही, शी एंड इट। यूज शैल विथ ओनली आई एंड वी। शैल को आप सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल करना, यू, दे, ही, शी, इट को इट के साथ नहीं, इनके साथ आप विल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है? सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। या एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, इट्स लाइक आई शैल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। अभी मैं नहीं गया हूं। ठीक है? अभी मैं नहीं गया हूं, ना मैं जा रहा हूं। ठीक है? दैट मीन्स आई शैल गो टू शिमला नेक्स्ट वीक। मैं जा रहा हूं, यानी वो वक्त अभी नहीं आया है, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में मैं जाने वाला हूं। ठीक है? या पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन सैटरडे। सैटरडे अभी नहीं आई है, सैटरडे आने वाली है, तो उस दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाला है। ठीक है? इट इंडिकेट्स दैट एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम। गेटिंग? दिस इज व्हाट फ्यूचर टेंस इज ऑल अबाउट, डियर स्टूडेंट्स। So, this is all about simple future tense. Now, dear students, let us move on to the next, that is future continuous tense. Here is future continuous tense. Now, what is future continuous tense all about, dear students? Very important and very interesting. Because future continuous tense, let us try to understand the meaning of future continuous tense. What do we call future continuous tense, and later we'll be discussing its formation. बाद में इसकी formation पे बात करेंगे। पहले समझते हैं future continuous tense होता क्या है। नाम में ही छुपा है काम। Dear students, let me tell you this future continuous tense, it's also called future progressive tense. अब future में जारी रहने वाला कोई काम, this is what future continuous or future progressive tense is all about. Getting? Now, let me give you its definition, dear students. Future continuous tense, it denotes an action as going on at some point in future time. यानी कोई काम जो फ्यूचर में जारी रहने वाला है। ठीक है? किसी टाइम के लिए फ्यूचर में जारी रहने वाला है। नाउ, इस तरह से मैं आपको समझा सकता हूं, डियर स्टूडेंट्स। इट्स लाइक मैं कहूंगा आपसे, डोंट फोन मी बिटवीन 7 and 8। अभी वो 7 and 8 आया नहीं है, यानी मैं शाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं इस वक्त में चल रहा हूं, अभी मैं, इट्स लाइक 4 बज चुके हैं, 4 बजे मैं आपसे कहता हूं कि, क्या कहता हूं, डोंट फोन मी बिटवीन 7 and 8। वो 7 and 8 यानी मैं शाम की बात कर रहा हूं। 7 and 8 अभी वो टाइम आया नहीं है, आने वाला है। तो 4 बजे मैं कहता हूं, डोंट फोन मी बिटवीन 7 and 8। ओ, मुझे फोन नहीं करना 7 और 8 के बीच में। क्यों? आई विल बी स्टडीइंग फॉर द इंग्लिश टेस्ट, या आई विल बी स्टडीइंग, आई विल बी रीडिंग, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी स्लीपिंग। डोंट फोन मी बिटवीन 7 and 8। मुझे 7 और 8 के बीच में फोन नहीं करना। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा। ये जो आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी ईटिंग, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? इसी को तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। गेटिंग? ये समझ में आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इट्स समथिंग लाइक, यानी काम फ्यूचर में होगा और कुछ टाइम के लिए जारी रहेगा। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, रीना विल बी रनिंग ए रेस। अभी उसने रेस नहीं दौड़ी है, वो दौड़ने वाली है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर में काम जारी रहने वाला है। आई विल बी वॉचिंग द रेस, मैं रेस देख लूंगा। ठीक है? आई विल बी वॉचिंग द रेस, यानी जब भी कोई एक्शन आने वाले वक्त में होगा और कंटिन्यूअसली चलेगा, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी आने वाले वक्त में लगातार होने वाला काम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाता है। इट्स लाइक समथिंग टू मेक प्रेडिक्शंस इन द फ्यूचर। ये कुछ इस तरह से, टू मेक प्रेडिक्शंस इन द फ्यूचर, ऐसा जैसे फ्यूचर में प्रेडिक्शंस करना, टू मेक प्रेडिक्शंस इन द फ्यूचर। जैसे मदर विल बी कुकिंग डिनर, मां खाना पकाने वाली है। ठीक है? अभी उसने नहीं पकाया, वो फ्यूचर में पकाने वाली है, और ये काम जो है कुछ देर तक जारी रहने वाला है। दिस इज व्हाट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज ऑल अबाउट। ही विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए तैयारी कर रही, ठीक है,
करेगी, ही विल बी गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। अभी वो नहीं, फ्यूचर में वो काम जारी रहने वाला है, फ्यूचर में वो तैयारी करेगी और ये काम जो है कुछ देर तक जारी रहेगा। दे विल बी हैविंग डिनर, अभी उन्होंने डिनर नहीं किया, वो करने वाले हैं डिनर और ये काम कुछ देर तक जारी रहने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? या हम सिंपली नाउ इट्स फॉर्मेशन इज मस्ट। इट्स लाइक इसकी जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, दैट इज सब्जेक्ट प्लस, हाँ लिखो सब्जेक्ट प्लस इट्स देयर, इसकी फॉर्मेशन दी है यहां पे, कॉन्टिन्यूअस है ना यहां पे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दूसरा वाला, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इंग, दैट इज इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इट्स लाइक सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। वही हो गया, I shall be writing, we shall be writing, you will be writing, you will be writing, he, she, it will be writing, they will be writing. Getting subject plus will, shall plus be plus first form plus ing. Getting? This is called ing form of the verb. Ram will be playing. I shall be watching the TV. I shall be watching the TV. He will be sleeping. Getting? यानी फिर से ये this is the tense, action which will take place, we talk about a planned action. यानी ये एक टाइम से एक, it's like it's like action which will take place, जो काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, it's like we talk about a planned action, एक planned action के बारे में हम बात कर रहे हैं। it's something that is happening, जो होने वाला है फ्यूचर में, कुछ देर जारी रहने वाला है। It's not just something that has happened, but it's happening, होने वाला। It's about something that happens in the future, जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। Something that happens after now, that continues for some time, जो कुछ देर तक जारी रहने वाला है बाद में। It's in progress. Getting? So this is all about this future continuous tense. I hope you all have understood what I said. So inshallah in tomorrow's lecture we'll be discussing the next two tenses, that is future perfect tense and future perfect continuous tense. Thank you. Goodbye.